Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, let's unpack this. Before we really jump into the findings today, it's super important to say this first. This deep dive, well, like a lot of summaries you find online, it's based on a distillation. Really, it's kind of like a chatbot-generated summary of an incredible piece of original research. That's a really crucial point to make up front. It is, because while we're definitely here to give you the key insights, get you up to speed fast, reading deeply, engaging with the full thing, that's absolutely vital. Things like wisdom, empathy, real human understanding. Well, they're lived experiences, right? They're not just processes you can optimize or automate away in a summary. Exactly. You can't just get the Cliff's Notes on being human. So true. So look, whether you subscribe here or not, please really make time to read the original article. It's thoughtfully crafted, it's open access, published as a top journal, Econometrica. Yeah, really prestigious one. FT50 list. Right. The authors are Yiting, Chen, and Songfa Zhong. It's 2025, volume 93, issue 2, pages 439 to 462. Seriously, go find it. Read it. It's worth your time. Absolutely. Okay, so with that really important message out there, let's get into today's topic. This deep dive, it centers on this really fascinating question researchers looked into. How does uncertainty affect our moral behavior? That's a great question. Does facing the unknown make us, more selfish, more cooperative, less honest? Precisely. And our source is that single, really in-depth paper from Econometrica we just mentioned. Our mission today, it's basically to walk you through the clever experiments they ran. Some ingenious setups. And reveal their, honestly, quite surprising findings about honesty and altruism when things feel uncertain. Think of this as your shortcut to understanding these pretty complex ideas straight from the source. And what's so interesting here is how this research really pushes back against some standard ideas in economics about how we make decisions under uncertainty. Like the idea that we're always perfectly rational calculators. Kind of, yeah. Traditional models often assume we just weigh the odds, weigh the outcomes, and try to maximize our gain. But this paper explores things like, anxiety, maybe the sheer complexity of uncertain situations. And how those might lead us to behave differently. Exactly, in ways those standard models just, they don't predict. And they investigated this using some really smart experiments. The main one, the core one, was a twist on something called the dice game. That's right, based on earlier work, but adapted. So in their version, subjects see this frame, with 6 boxes. It represents a kind of lottery. Okay. They're asked to mentally roll a die, basically, pick a number, 1 to 6, in their head. Then they find out that one specific box out of those 6 has an extra payoff, let's say 4 RMB. Got it. So you pick a number, then you see where the extra money is. What do you report? You report the number you supposedly chose in your head before you knew where the money was. Okay. So how does lying come into play here? Well, they measure it at the group level in aggregate. See, only about 1 in 6 people, purely by chance, should have mentally picked the number corresponding to that box with the extra RMB 4. Right, 16.7% chance. Exactly. So if significantly more than 16.7% of people report the number matching the +4 box, that suggests people are lying to get the extra cash. They're claiming they picked the winning number when they actually didn't. Clever. Simple but clever. And to see how uncertainty affected this lying. They varied the background conditions. While people were doing this die roll task, they were also facing a base lottery payoff, also shown in those 6 boxes. They might get a high payoff H with probability P, or a low payoff value. Okay, so the uncertainty comes from that P value. Precisely. They ran the experiment under different conditions. Sometimes P was 0 or 1, the complete certainty about getting the low or high base payoff. Other times, P was somewhere in between, creating uncertainty. They also changed the difference between the high and low payoffs, the spread. Different levels of riskiness, essentially. Different stakes in that background lottery. So each subject made 21 decisions across these different uncertainty levels and payoff spreads. Okay, here we go. Here's where it gets really interesting, right? What actually happened? Did people lie more or less when that background lottery was uncertain? This is observation 1 from the paper, and it's pretty startling. Subjects were significantly less likely to lie. So less likely to report getting that +4 RMB dishonestly when they were in the uncertain environments compared to the certain one. Less likely. They were more honest when things were uncertain. That's what the data showed, yeah. It feels backwards, doesn't it? It totally does.
I might have guessed uncertainty gives you cover, or makes you grab any sure thing, even dishonestly. Me too, maybe. Yeah. But look at the numbers. Under uncertainty, the average reader reporting the +4 box was about 59%. Under the certain conditions, it was way higher, like 75% or 78%. Wow. That's a huge drop, like more than 20% fewer instances of lying just because the background was uncertain. A 22.7% reduction, yeah. It's a substantial effect. Simply making the environment uncertain seemed to curb dishonesty. Was that consistent? Did the spread you mentioned matter? It did seem to. The effect was stronger. The reduction in lying was bigger when the difference between the high and low potential payoffs in that background lottery was large, like 40 versus 0 or 30 versus 10. When the spread was small, like 22 versus 18, the effect was still there but less pronounced. So the stakes of the uncertainty seemed to amplify the effect. Okay, so uncertainty makes people more honest, especially when the uncertainty itself feels significant. Why is this such a big deal theoretically? You mentioned it challenges standard models. Yeah, it really does. It clashes particularly with something called the dominance principle in standard economics. Dominance. What's the gist of that? Well, the simple idea is if one choice, let's say choice A, is better for you than choice B in every single possible future state, then you should always pick A, even when you're uncertain about which future state will happen. Okay, makes sense. In this dice game, lying to get the extra +4 RMB always gives you more money than not lying, right? Regardless of whether you get the high or low outcome from the background lottery. True. Financially, lying is always dominant. Exactly. So standard models based on dominance would predict you'd be at least as likely, maybe even more likely, to lie when things are uncertain. The fact that people were significantly less likely to lie completely violates that. So it's showing that uncertainty itself is doing something to our choices, something beyond just calculating expected money. That's the key implication. Uncertainty isn't just factored into the probabilities, it seems to be actively changing the decision process itself. All right, so the paper establishes that uncertainty reduces lying. But the next big question is why? How does it work? They ran more experiments to try and figure that out, right? Correct. They designed 2 specific mechanism experiments to sort of poke at the why. They wanted to see if it was about the specific moral weight of lying, and also whether it mattered who was facing the uncertainty. Okay, let's take the first one where they changed the moral part. Right. This was the direct choice experiment. Same basic setup, 6 boxes, one with +4 RMB, but they took out the mental die roll and the reporting. Subjects just chose a box directly. So no lying involved, just picking the box with the most money. Exactly. Choosing the +4 box here isn't lying. It might be seen as maybe greedy, but that's generally considered a weaker moral concern than outright dishonesty. Okay. Did uncertainty still make people shy away from the maximum payoff in this greed scenario? Observation 2 showed, yes, it still did. People were slightly less likely to just pick the +4 box under uncertainty, around 92%, compared to certainty over 99%. Odd, but... The difference was much, much smaller than in the original dice game. Remember that 22.7% reduction in lying? Here, the reduction in choosing the max payoff was only about 7.3%. I see. So uncertainty still had an effect, but it was way weaker when the moral stakes were lowered from lying to just choosing the most. Precisely. It strongly suggests that the strength of the moral norm being violated honesty versus just avoiding perceived greed really matters for how much uncertainty impacts the decision. That makes sense. And the second mechanism experiment, that one looked at whose uncertainty it was? Yes, the second party experiment, this is clever too. Here, the subject, let's call them player B, still did the mental die roll and decided whether to lie to get the +4 RMB for themselves. Okay, so they're deciding whether to lie for their own gain. Right. But the uncertainty that background lottery with high-low payoffs didn't affect their outcome. It affected the payoff of an anonymous partner, player A. Player B got a fixed base amount plus whatever they got from the potential lie. So player B decides to lie or not, affecting their own money, but the risk in the background affects someone else entirely. Exactly. The uncertainty was external to their own payoff risk, apart from the lie itself. And what happened then? Did uncertainty still make player B more honest? Observations 3 showed. Well, only marginally. People were slightly less likely to lie under uncertainty,
around 55%, compared to certainty around 58-60%, but the difference was much smaller again, about 7.8%, and it wasn't even consistent across all the payoff conditions. So when the uncertainty wasn't personally affecting your main potential outcome, its power to make you more honest really diminished. That seems to be the clear implication. The effect of uncertainty on your moral compass seems strongest when you are the one directly facing the potential ups and downs of that uncertainty. Wow. Okay. Those two experiments really help narrow down why this might be happening. It's about personal uncertainty and strong moral stakes. But they didn't stop there, did they? They wanted to make sure this wasn't just some weird fluke of the dice game setup. They tested for robustness and generalizability. That's right. Good science. They ran 3 more experiments to really stress test the finding. First up, a dice game, but involving a potential loss. A loss. How did that work? Similar idea, but instead of one box having +4 RMB, one box had a penalty, metaphor RMB. Lying, in this case, meant not reporting that you landed on the penalty box so you'd avoid the loss. Okay, so dishonesty helps you avoid a negative outcome instead of getting a positive one. What did uncertainty do here? Observation 4 showed the same pattern, just flipped. Subjects were less likely to lie to avoid the loss when facing uncertainty compared to certainty. So they were more honest under uncertainty, even when being honest meant taking a hit. Exactly. It reinforces the core finding. Uncertainty seems to promote honesty. Whether that honesty means missing a gain or accepting a loss, it's quite consistent. That's strong. What was the next track? Something about timing. Yeah, the ex-ante resolution experiment. This one was done in person, with a physical die. The twist was that the outcome of the background lottery uncertainty was actually decided before the subject made their lying decision. Before, so the uncertainty was gone. Technically, yes, the outcome was set. But, and this is key, the subject didn't know the outcome. It was kept hidden until the end. They still felt uncertain when deciding whether to lie about their die roll, which affected a potential plus SGD2 payoff in this version. So it's about the perception or experience of uncertainty, even if the outcome is technically already fixed but unknown. That seems to be the case, and observation 5 confirmed it again. Subjects were less likely to lie when facing this resolved but unknown uncertainty compared to full certainty. The pattern held. Incredible. It really seems to be about that feeling of not knowing what's going to happen. It does. And finally, they took it one step further. Does this only apply to honesty, or does it generalize to other types of moral or pro-social behavior? They used a version of the dictator game. The sharing game. One person decides how to split a pot of money. Exactly. So, subjects, the dictators, first faced a lottery that would determine how much money they'd get, a high or a low amount. Then they had to make a simple choice. Either share the resulting amount evenly with an anonymous partner, 50-50 split, or keep it all for themselves, 1,000 split. Okay. And the uncertainty was about their own initial pot of money. Yes. How did uncertainty about their own potential wealth affect their willingness to share it? And the result. Observation 6 is really interesting. Subjects were significantly more likely to choose the option to share evenly when their own endowment was uncertain compared to when it was certain. Wow. So uncertainty made them more generous, too, not just more honest. It seems so. More willing to commit to sharing, even before knowing exactly how much they'd be sharing. That extends the finding quite a bit. It does. Though there's a slight nuance here. Unlike the lying games, the positive effect of uncertainty on sharing decreased as the probability of getting the high endowment increased. Why might that be? The paper suggests it's likely because the expected cost of sharing changes with the probability in this game. If you think you're very likely to get the high amount, sharing 50% feels more costly than if you think you might get the low amount. In the lying game, the potential gain from lying, plus 4 RMB, was fixed, regardless of the background lottery's probabilities. Okay. So the incentive structure interacts a bit differently with the probabilities here, but the core tendency, more pro-social behavior under uncertainty, still holds. That's the main takeaway. Across avoiding dishonest gains, avoiding dishonest loss avoidance, dealing with unknown resolutions, and even deciding to share resources, the pattern is remarkably consistent. Personal uncertainty tends to nudge people towards more moral or pro-social choices. Okay, so let's bring this all together. We have this really robust pattern. We know it's strongest when uncertainty is personal and the moral decision feels significant. So why? What's the paper's best guess for the mechanism driving this? Well, as we touched on, it challenges the simple rational models.
The paper leans towards explanations rooted in psychology, primarily focusing on sort of two interacting ideas, anxiety and complexity. Okay, let's start with anxiety. How does that fit in? The idea is pretty intuitive, actually. Facing uncertainty, not knowing what's going to happen, can make people feel anxious or stressed. It creates a sense of lack of control. Right, that makes sense. And in that state of unease, acting morally, being honest, being generous, might provide a psychological benefit. It could offer a feeling, maybe subconscious, of regaining some control, or perhaps establishing a kind of link between doing good and good things happening. Like tapping into ideas of karma or a just world. If I act well, maybe the uncertain outcome will swing my way. Exactly, that kind of feeling. It's acting as if your moral behavior can influence the uncertain outcome, providing a psychological balm, a sense of agency when you feel vulnerable to chance. And that fits why the effect is strongest when you face the uncertainty personally, and why it's stronger for lying, a clearer moral rule than just greed. Precisely. The need for that sense of control is most potent when your own outcomes are on the line. And the moral act feels like a meaningful way to exert some influence, however illusory. Okay, and what about the complexity angle? Uncertain environments are just Yeah. harder to think through. There are probabilities, different potential outcomes. It's cognitively demanding. Sure. So the complexity perspective suggests that when faced with this cognitive load, people might fall back on simpler rules of thumb or heuristics. And sometimes these heuristics might happen to align with moral or fair choices like just be honest or split it evenly, might feel like simpler salient options when calculating the optimal selfish strategy is too hard. But does complexity alone guarantee more morality? Couldn't heuristics also lead to more selfish behavior sometimes? That's a fair point, and the paper acknowledges that complexity by itself doesn't have a clear directional prediction for morality. However, they suggest the two ideas likely work together. When things feel complex and uncertain, making you anxious, you might be more likely to reach for those simpler, morally tinged heuristics because they also offer that sense of control we talked about. The complexity might make the anxiety-driven moral response more appealing. Ah, I see. They kind of reinforce each other. The complexity makes rational calculation harder, and the anxiety makes the moral heuristic feel psychologically beneficial. That seems to be the proposed interplay. And they connect this to ideas like magical thinking. Yeah, they discuss two related concepts, magical thinking and quasi-magical thinking. Magical thinking is believing your actions literally change the odds. Like if I'm honest, the die is more likely to land on 6. Right. A direct causal belief even is irrational. And quasi-magical thinking. That's maybe more subtle and relevant here. It's acting as if your actions influence outcomes, even if, when you stop and think about it rationally, you know they don't. Like knocking on wood or wearing a lucky shirt. You don't really believe it works, but you do it anyway. Exactly like that. Or maybe throwing dice harder for a high number. The paper suggests the evidence might lean more towards this quasi-magical thinking, partly because the experiments explicitly stated the probabilities and independence, which should dampen explicit magical beliefs. People might still act as if being honest gives them a better shot, even without consciously believing it. So it's this intuitive, maybe subconscious drive to feel like our good deeds offer some protection or positive influence when we're facing the void of uncertainty. That captures the essence of it really well, I think. So what does this all mean for you listening to this in your everyday life? How does this research connect outside the lab? Well, the paper itself draws some interesting parallels. Think about financial markets, for instance. Why do some investors avoid sin stocks or strongly prefer socially responsible investments, especially when markets feel shaky and returns are uncertain? Is the idea that SRI might give them a sense of doing good, which eases anxiety about the uncertain financial outcomes? That could definitely be part of the psychology, according to this framework. Or consider charitable giving. We often see surges in donations during major crises like the beginning of the COVID pandemic, or even during personal times of uncertainty like job insecurity or health worries. So giving to others might provide that sense of control or agency when everything else feels unpredictable, acting virtuously as a way to cope with external threats. It's a plausible contributing factor suggested by this research. Acting morally, whether it's investing ethically or donating generously, might serve a psychological function of restoring a sense of order or hope, or acting as if it influences fate, precisely when uncertainty makes us feel most vulnerable.
This has been, wow, quite a deep dive into a really fascinating and, as you said, counterintuitive finding. It really has. And the core takeaway is surprisingly clear and consistent across all those experiments. Yeah, that people tend to behave more morally, less inclined to lie, more inclined to share when they are personally facing uncertain situations. And the implications are pretty significant for how we think about decision-making. It's not just a small tweak to existing models. It really challenges the idea that we're purely rational actors under uncertainty. It highlights these powerful psychological factors. Like the need for a sense of control, or this tendency towards quasi-magical thinking, acting as if our morality shapes our luck. These seem to play a really important, maybe often overlooked, role. It definitely adds a richer, more complex layer to understanding why we do what we do when the future is unclear. Absolutely. So maybe here's a final thought for you to take away and mull over. Thinking about this idea of quasi-magical thinking, acting as if our choices influence uncertain outcomes. Consider your own life. When you face uncertainty, maybe a job interview outcome, a health checkup, even just waiting for important news, do you ever find yourself acting slightly differently? Maybe being extra careful crossing the street, or being unusually nice to a stranger, or avoiding small temptations? Acting as if these small moral adjustments might somehow tilt the scales of fate in your favor, even if you consciously know they're unrelated. It's a subtle thing to look for. It is. Why do we have these tendencies? And what does it really reveal about how we understand rationality, morality, and our deep-seated need to find meaning or control, especially when facing the unknown? Something to definitely reflect on next time you find yourself in uncertain waters. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। নমস্কার। আজকের আলোচনাটা কিন্তু বেশ অন্যরকম। আমরা একটা গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলবো, তবে তার আগে একটা জরুরি কথা। এই যে আলোচনাটা শুনছেন, এটা আসলে ওই প্রবন্ধটার একটা চ্যাটবোর্ড জেনারেটেড সারাংশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। মানে মূল যে গভীরতা, যে ভাবনা, সেটা তো পুরোটা পড়াছড়া পাওয়া মুশকিল। দেখবেন গভীরভাবে কিছু পড়লে আমাদের মধ্যে যে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি বা মানুষকে বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়, সেটা আসলে তথ্যের যোগফল নয়, ওটা জীবনে ধারণ করার বিষয়। তাই আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, চেন আর জংয়ের লেখা মূল প্রবন্ধটা সময় করে একটু পড়বেন। এটা ইকোনোমেট্রিকা জার্নালে প্রকাশিত, মানে খুব উঁচু মানের গবেষণা, আর ওপেন অ্যাক্সেস, মানে বিনামূল্যেই পড়া যায়। তো আজকের বিষয়বস্তুটা কি? খুব সহজ একটা প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা বেশ জটিল। অনিশ্চয়তা কি আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে? আমরা দেখব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গবেষকরা কি খুঁজে পেয়েছেন। হ্যাঁ, প্রশ্নটা আসলেই দারুণ, আর গবেষণাটাও সেভাবেই ডিজাইন করা। তো আসুন শুরু করা যাক। বলুন তো, মূল পর্যবেক্ষণটা কি ছিল? মানে সবচেয়ে বড় যে ফাইন্ডিংটা। মূল পর্যবেক্ষণটা হলো, যখন মানুষ অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, তখন তারা নিশ্চিত পরিস্থিতির চেয়ে একটু বেশি নৈতিক আচরণ করে। ইন্টারেস্টিং। যেমন ধরুন, সামান্য কিছু অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার জন্য মিথ্যে কথা বলার যে প্রবণতা, সেটাই অনিশ্চয়তার সময় কমে যায়। এটা তো অর্থনীতির একটা প্রচলিত ধারণার সাথে ঠিক মেলে না, তাই না? মানে ডমিনেন্স প্রিন্সিপল বলে একটা কথা আছে না? একদম ঠিক। ওই ডমিনেন্স প্রিন্সিপল অনুযায়ী মানুষ সাধারণত নিশ্চিত লাভটা ছাড়ে না, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অনিশ্চয়তা এলে হিসেবটা পাল্টে যাচ্ছে। ওদের মূল পরীক্ষাটা, যেটাকে ওরা ডাইস গেম বলছে, সেটার ডিজাইনটা খুব চমৎকার। ডাইস গেম? সেটা কেমন? একটা সংখ্যা ভাবতে, মানে ছক্কার চালের মতো আর কি। তারপর তাদের জানানো হয় যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বললে তারা কিছু অতিরিক্ত টাকা পাবে, ধরুন 4 RMB। আচ্ছা। এরপর তাদের জিজ্ঞেস করা হয় তারা মনে মনে কোন সংখ্যাটা ভেবেছিল। ও আচ্ছা, তার মানে এখানে একটা সুযোগ থাকছে মিথ্যে বলার, যদি তাদের ভাবা সংখ্যাটা পুরস্কারের সংখ্যার সাথে না মেলে। ঠিক ধরেছেন, এখানেই আসল ব্যাপারটা। যখন পুরস্কারটা ছিল নিশ্চিত, মানে হয় 40 ইউয়ান পাবে, না হয় 0, তখন মিথ্যে বলে ওই অতিরিক্ত টাকাটা নেওয়ার প্রবণতা ছিল বেশ উঁচু, প্রায় 75 থেকে 78%। বেশ উঁচু তো। হ্যাঁ, কিন্তু যখন পুরস্কারটা একটা লটারির মতো করে দেওয়া হলো, মানে টাকা পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়, মানে অনিশ্চিত। হ্যাঁ, অনিশ্চিত,
যেমন ধরুন যে সংখ্যাটা তারা রিপোর্ট করবে সেটার উপর ভিত্তি করে জেতার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। যেমন N6 সম্ভাবনা 40 পাওয়ার আর বাকিটা 0 পাওয়ার। তখন দেখা গেল মিথ্যে বলার হারটা বেশ খানিকটা কমে গেছে, প্রায় 59% নেমে এসেছে। বাহ, তার মানে প্রায় 20% পয়েন্টের পার্থক্য। হ্যাঁ, আর এই প্রভাবটা আরও জোরালো হয়েছে যখন লটারির সম্ভাব্য দুটো ফলাফলের মধ্যে, মানে বেশি টাকা আর কম টাকার মধ্যে পার্থক্যটা বেশি ছিল। দারুণ তো। তার মানে শুধু অনিশ্চয়তাই নয়, অনিশ্চয়তার মাত্রাটাও এখানে একটা ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এখানে কি শেষ, নাকি আরও কিছু পরীক্ষা ছিল? না না, গবেষকরা আরও গভীরে গিয়েছিলেন। কয়েকটা সম্পূরক পরীক্ষাও করেছেন তারা। যেমন একটা পরীক্ষায় নৈতিকতার দিকটা একটু হালকা রাখা হয়েছিল, মানে সরাসরি মিথ্যে বলার ব্যাপার ছিল না, ছিল শুধু লোভ সামলানোর প্রশ্ন। সেখানেও দেখা গেল অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মানুষ বেশি টাকার লোভটা এড়িয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, মূল পরীক্ষার মতো অতটা তীব্রভাবে নয়, প্রভাবটা একটু কম ছিল। আচ্ছা, আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং পরীক্ষা ছিল। সেখানে অনিশ্চয়তাটা নিজের জন্য ছিল না, ছিল অন্য একজন অচেনা অংশগ্রহণকারীর জন্য, মানে সেকেন্ড পার্টি সিচুয়েশন। ও, তখন কি হলো? তখন কিন্তু মূল পরীক্ষার মতো অতটা স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়নি। প্রভাবটা ছিল বেশ দুর্বল আর একটু যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তার মানে ব্যাপারটা মূলত ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তার সাথেই বেশি জড়িত বলে মনে হচ্ছে। এর পেছনে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি হতে পারে? কেন এমন হচ্ছে? আসলে দুটো প্রধান ব্যাখ্যার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রথমটা হলো উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটি। হ্যাঁ, অনিশ্চয়তা তো আমাদের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি, একটা উদ্বেগ তৈরি করে, তাই না? তখন হয়তো নৈতিক আচরণ করাটা মানুষকে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি দেয়। মনে হয় যেন আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে অন্তত খারাপ কিছু হবে না। মানে কিছুটা কর্মফল বা ভাগ্যের উপর ভরসা করার মতো। কিছুটা সেরকমই। একে অনেক সময় কোয়াসি ম্যাজিক্যাল থিঙ্কিং বলা হয়। মানে অবচেতন মনে একটা বিশ্বাস কাজ করে যে আমার নৈতিক আচরণ হয়তো ভাগ্যকে একটু প্রভাবিত করতে পারে। এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু মূল ফলাফলের সাথে বেশ ভালো খাপ খায়। আর কেন নিজের ওপর অনিশ্চয়তা না থাকলে বা নৈতিকতার চাপ কম হলে প্রভাবটা কমে যায়, সেটাও এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা কি? দ্বিতীয়টা হলো জটিলতা বা কমপ্লেক্সিটি। মানে অনিশ্চিত পরিস্থিতিগুলো বিশ্লেষণ করাটা তো একটু বেশি কঠিন, তাই না? একটু বেশি ভাবতে হয়। হ্যাঁ, তা তো বটেই। তো এই বাড়তি মানসিক চাপের কারণে হয়তো মানুষ একটু অন্যভাবে আচরণ করে। এটাও ফলাফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু কেন মানুষ ঠিক বেশি নৈতিক আচরণ করবে সেটার খুব স্পষ্ট উত্তর এটা দিতে পারে না। আর অন্য পরীক্ষাগুলোর ফলাফলও এটা দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। আচ্ছা, তার মানে উদ্বেগের ব্যাখ্যাটাই বেশি সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আপাতত তাই মনে হচ্ছে। মানে ডেটা সেটার দিকেই বেশি ইঙ্গিত করছে। তাহলে যদি আমরা পুরো ব্যাপারটা এক জায়গায় আনি, মোদ্দা কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোনো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ি, তখন আমাদের ভেতরের নৈতিক কম্পাসটা হয়তো একটু বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। ঠিক। এটা হতে পারে ওই অ্যাংজাইটি কমানোর একটা চেষ্টা, অথবা হয়তো জটিল পরিস্থিতিটা সামাল দেওয়ার একটা উপায়। একদম। সংক্ষেপে বললে অনিশ্চিত পরিবেশ আমাদের কিছুটা বেশি নৈতিক করে তুলতে পারে। এটা কিন্তু আমাদের প্রচলিত ধারণা থেকে একটু আলাদা, তাই না? সত্যি ভাবনার মতো একটা বিষয়, অপ্রত্যাশিত কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আর এখানেই কিন্তু আরও একটা জরুরি প্রশ্ন চলে আসে, তাই না? কি রকম? আমরা তো আজকালকার জীবনে অনিশ্চয়তাটাকে যতটা সম্ভব দূর করতে চাই, সবকিছু ঐচ্ছিকযোগ্য, সবকিছু নিয়ন্ত্রিত রাখতে চাই। হ্যাঁ, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা তো আমরা সবাই খুঁজি। কিন্তু যদি এই গবেষণার ফাইন্ডিং সত্যি হয়, মানে যদি অনিশ্চয়তাই নৈতিক আচরণের একটা চালিকা শক্তি হয়, তাহলে এই যে আমরা জীবন থেকে অনিশ্চয়তা দূর করার চেষ্টা করছি, এটা কি অজান্তেই আমাদের সামাজিক বা ব্যক্তিগত নৈতিকতার উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে? আমরা কি ভালো থাকার চেষ্টায় ভালো হওয়ার একটা কারণকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি? ওয়াও, এটা তো একটা গভীর প্রশ্ন তুলে দিলেন। এটা নিয়ে সত্যি ভাবা দরকার। এই ভাবনাগুলো নিয়ে আজকের মতো আলোচনাটা শেষ করা যাক। আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, যদি আরও গভীরে যেতে চান, নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করতে চান, তাহলে মূল গবেষণা প্রবন্ধটা অবশ্যই পড়ে দেখবেন। লিঙ্কটা আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব।
नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। नमस्कार। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक ज़रूरी बात, ये जो चर्चा है ये एक बड़े भाषा मॉडल मतलब LLM द्वारा तैयार किया गया एक सारांश है। हाँ, और गहराई से पढ़ने पर यह साफ होता है कि ज्ञान, सहानुभूति और मानवीय समझ, इन्हें आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इन्हें जीना पड़ता है। बिल्कुल। तो चाहे आप ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारी गुजारिश है कि आप प्रतिष्ठित FT50 जर्नल में छपे इस मूल ओपन एक्सेस लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। काफी विचारशील काम है। सही कहा। तो आज हम एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं। क्या अनिश्चितता, मतलब जब हमें पक्का पता ना हो कि क्या होने वाला है, क्या ये चीज लोगों को ज्यादा नैतिक या ईमानदार बनाती है? हाँ, ये सवाल यिटिंग, चेन और सोंगफा जोंग के एक हालिया रिसर्च पेपर से आया है, जो इकोनोमेट्रिका जैसे बड़े जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इकोनोमेट्रिका, हाँ। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि मुश्किल हालात, जब नतीजा पता ना हो तो हम बेहतर इंसान बन जाते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? है तो लेकिन देखते हैं शोध क्या कहता है। हाँ, तो शोधकर्ताओं ने इसे समझने के लिए कई प्रयोग किए। एक जो मुख्य प्रयोग था उसे हम पासे वाला खेल कह सकते हैं समझने के लिए। अच्छा। इसमें हिस्सा लेने वालों को एक तरह की लॉटरी दी गई। मतलब उन्हें पक्का नहीं पता था कि उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे या कम। ठीक है, अनिश्चितता थी। हाँ, फिर उन्हें कहा गया कि मन ही मन एक पासा फेंकें, मतलब 1 से 6 के बीच कोई नंबर सोचें। ओके। फिर उन्हें बताया गया कि अगर उन्होंने एक खास नंबर सोचा होगा तो उन्हें 4 युआन ज्यादा मिलेंगे, और बस उनसे ये पूछा कि भाई आपने कौन सा नंबर सोचा था। अच्छा, तो ये मौका था झूठ बोलने का, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो। बिल्कुल। और यही बात मजेदार हो जाती है। देखिए, जब नतीजा पक्का था, मतलब लोगों को साफ पता था कि उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे या नहीं, तब ज्यादा लोगों ने झूठ बोला। हाँ, कितना ज्यादा? करीब 75 से 78% लोगों ने वही खास नंबर बताया जिससे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, भले ही उन्होंने वो सोचा ना हो। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है ना? लेकिन जैसे ही नतीजा अनिश्चित हुआ, वो लॉटरी वाली स्थिति आई, झूठ बोलने का रुझान काफी कम हो गया। सच में? कितना कम? गिरकर सिर्फ 59% रह गया। मतलब 75-78% से सीधा 59% पर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। वाकई ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये खोज ना अर्थव्यवस्था के जो मानक मॉडल है, खास तौर पर डोमिनेंस या प्रबलता का सिद्धांत, उसके लिए एक चुनौती है। अच्छा, वो डोमिनेंस वाला सिद्धांत क्या कहता है आसान शब्दों में? वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई चीज हर निश्चित स्थिति में बेहतर है तो उसे अनिश्चित स्थिति में भी बेहतर ही माना जाना चाहिए। मतलब अगर ज्यादा पैसे मिलना हमेशा अच्छा है, तो चाहे स्थिति पक्की हो या अनिश्चित, लोगों को ज्यादा पैसे के लिए ही जाना चाहिए। पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। अनिश्चितता में लोग कम झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल, यहीं पर यह पहेली है। और शोधकर्ता इसके 2 मुख्य संभावित कारण बताते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है चिंता का पहलू या एंजाइटी एस्पेक्ट। उनका कहना है कि जब हालात अनिश्चित होते हैं तो लोगों में एक तरह की चिंता या बेचैनी बढ़ती है, और इस चिंता को कम करने या शायद स्थिति पर एक तरह का नियंत्रण पाने की कोशिश में वे ज्यादा नैतिक व्यवहार करते हैं। जैसे शायद अनजाने में वो कर्म के सिद्धांत पर भरोसा कर रहे हों कि अच्छा करेंगे तो नतीजा अच्छा होगा। ओह, मतलब एक तरह की जादुई सोच कि हमारा अच्छा काम शायद अनिश्चित नतीजे को बदल देगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसे क्वाजी मैजिकल थिंकिंग भी कहा गया है। ये मानना कि हमारे काम का असर उन चीजों पर पड़ेगा जिन पर असल में उसका कोई नियंत्रण नहीं है। दिलचस्प। और दूसरा कारण? दूसरा है जटिलता का पहलू। मतलब अनिश्चित स्थितियां समझने में थोड़ी ज्यादा पेचीदा होती हैं। हाँ, ये तो है। हो सकता है कि लोग ठीक से वो अगर मगर वाली सोच, जिसे कंटिंजेंट रीजनिंग कहते हैं, वो लगा ही नहीं पाते। उन्हें ठीक से समझ नहीं आता कि किस स्थिति में क्या होगा, और इस उलझन में वे शायद डिफॉल्ट रूप से ज्यादा ईमानदार रास्ता चुन लेते हैं। अच्छा, तो या तो चिंता कम करने के लिए या फिर उलझन की वजह से। हाँ, ये 2 मुख्य आइडिया हैं। और क्या उन्होंने इसे और परखा? मतलब क्या ये असर हर तरह की स्थिति में दिखा? हाँ, उन्होंने और जांच की। उन्होंने देखा कि जब नैतिक चिंता थोड़ी कमजोर थी, जैसे मामला सिर्फ लालच से बचने का था, सीधे सीधे किसी को धोखा देने का नहीं, या फिर जब अनिश्चितता का असर किसी और पर पड़ रहा था, उन पर खुद नहीं, तब ये असर, मतलब अनिश्चितता में ज्यादा नैतिक होने वाला असर,
काफी कम हो गया। तो इससे तो लगता है कि वो व्यक्तिगत चिंता और नियंत्रण पाने की इच्छा वाला पहलू ज्यादा मजबूत है। हाँ, ये डेटा उसी तरफ इशारा करता है। और उन्होंने इसे दूसरे तरीकों से भी परखा था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जब लोगों को नुकसान से बचने के लिए झूठ बोलना था, तब भी नतीजा वही रहा, अनिश्चितता में कम झूठ। अच्छा। और यहां तक कि एक डिक्टेटर गेम होता है, जो आपको कुछ पैसे मिलते हैं और आप तय करते हैं कि दूसरे प्लेयर के साथ कितना बांटना है। हाँ। उसमें भी जब ये अनिश्चित था कि दूसरे को कितना मिलेगा या क्या होगा, तो लोग ज्यादा उदारता दिखा रहे थे, ज्यादा पैसे बांट रहे थे। गजब है। तो हर बार पैटर्न एक जैसा ही रहा। जब नतीजे पक्के नहीं तो लोग ज्यादा नैतिक व्यवहार करते दिखे। हाँ, उनके प्रयोगों में तो यही नतीजा बार बार आया। अब अगर हम इसे सिर्फ लैब से बाहर निकाल कर सोचें तो इसके मायने तो काफी गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारी असल जिंदगी के कितने ही बड़े फैसले होते हैं। कहीं निवेश करना है, सेहत से जुड़ा कोई बड़ा चुनाव करना है, इन सब में नतीजे अक्सर अनिश्चित ही होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पक्का तो कुछ नहीं होता। तो क्या ये जो एक अवचेतन नैतिक झुकाव अनिश्चितता में दिखता है, क्या वो इन बड़े असल जिंदगी के फैसलों में भी कोई भूमिका निभाता होगा? ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के इस रिसर्च का सार क्या निकलता है? सार यही है कि अनिश्चितता, चाहे वो चिंता की वजह से हो या हालात की जटिलता के कारण, वो लोगों को ज्यादा ईमानदारी और शायद ज्यादा उदारता की तरफ भी धकेल सकती है। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात लगती है एक तरह से। हाँ, लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। क्या? अगर अनिश्चितता नैतिकता को बढ़ावा देती है, तो हम जो आज लगातार कोशिश कर रहे हैं, डेटा के जरिए, भविष्यवाणी करने वाले एआई मॉडल्स के जरिए हर चीज में ज्यादा से ज्यादा निश्चितता लाने की, हाँ, हर चीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश, उसका हमारे सामूहिक नैतिक व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा? क्या हर चीज का नतीजा पहले से जानने की ये जो हमारी चाहत है, वो अनजाने में नैतिकता के एक अहम ड्राइवर, एक अहम चालक को ही कमजोर कर देगी? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। क्या पूरी निश्चितता की खोज हमें कम नैतिक बना देगी? ये एक संभावना है जिस पर विचार करना होगा। बिल्कुल। तो इस गहरी सोच के साथ हम एक बार फिर श्रोताओं को वो मूल इकोनोमेट्रिका लेख पढ़ने का आग्रह करेंगे। जी हाँ, उसे पढ़ना जरूर चाहिए।